and Hindus are being tortured and being killed. The government of India appealed to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Government of India is totally silent now. Whatever decision government of India will take, West Bengal government will stand by the decision. ধরে ধরে নিয়ে যাকে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম করা হচ্ছে, চিন্ময় মহারাজকে তার লিডারকে অ্যারেস্ট করে নির্যাতন করা হচ্ছে, খেতে দেওয়া হচ্ছে না। 693 এর মধ্যে 400 জন ছেলে ছিল বাঙালি সমাজ, হিন্দু বাঙালি সমাজ। দর্শক হয়ে যাচ্ছে, সরকারি সম্পদ তছনছ করছে, মন্দির ভাঙা হচ্ছে, বেলেডাঙ্গা ইস্যুকে দাঙ্গা ছড়াচ্ছে সরকারি মদতে। Sir, I want to raise a very important issue. Sir, our neighboring country Bangladesh, where the minorities and Hindus are being tortured and being killed. क्या हुआ? प्लीज Sir, Bangladesh is our neighboring country, attached with our state of West Bengal also. Sir, what we making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. The reason of which is best told to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh, what is happening over there. Sir, our Chief Minister yesterday adopted a resolution in West Bengal Assembly. Whatever decision government of India will take, West Bengal government will stand by the decision. We want to work together, but the people of Bangladesh want to be saved all out. And our experiences say in past, many refugees, evacuees used to come crossing Bangladesh border to our state. Our Chief Minister Mamata Banerjee very categorically has said that let government should come and they should reply. I would request you to direct the government, sir, to intimate the House latest position of Bangladesh. जगन्नाथ सरकार মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমার প্রশ্ন, বাঙালি হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? পশ্চিম বাংলার ওপারে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ নামক দেশটি 1947 সালে তৈরি হওয়া একটি দেশ। সেখানে যেভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে বাঙালি হিন্দুদের বেছে বেছে নির্যাতিত হতে হচ্ছে, তাদের মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তাদের আর্থিকভাবে তছরূপ করা হচ্ছে, রাতের বেলায় যেভাবে ধরে ধরে নিয়ে যাকে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম করা হচ্ছে সরকারি মদতে, তার বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদের আন্দোলন হচ্ছে, চিন্ময় মহারাজকে তার লিডারকে অ্যারেস্ট করে নির্যাতন করা হচ্ছে, খেতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের মা বোনদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। আজকে এইভাবে যদি চলতে থাকে, তাদের কি অপরাধ ছিল? ওপার বাংলা এপার বাংলার বাঙালি সমাজ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচাইতে অবদান যার বেশি, সেলুলার জেলে চলে যাবেন। 693 এর মধ্যে 400 জন ছেলে ছিল বাঙালি সমাজ, হিন্দু বাঙালি সমাজ, আর তারা আজকে স্বাধীনতার পর নির্যাতিত। ওপার থেকে এসে দেশ ভাগের পর কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে তারা অত্যাচারিত হচ্ছে, এপারে এসেও তাদের শান্তি নেই। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারী এসে আমাদের জনসাম্য ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়ার কিছু অংশ, হুগলি, হাওড়া, তারা এখানে নির্যাতিত এবং সরকারি মদতে হচ্ছে। এপারে সরকার পর্যন্ত আমরা দেখছি দর্শক হয়ে যাচ্ছে, সরকারি সম্পদ তছনছ করছে, মন্দির ভাঙা হচ্ছে, বেলেডাঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেভাবে বাংলায় বিভিন্ন জায়গায়, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা ছড়াচ্ছে সরকারি মদতে। এইভাবে প্রশাসন চলতে পারে না। তাদের অপরাধ কি ছিল? স্বাধীনতা এনে আজকে সরকার কেন নীরব?
দর্শকের ভূমিকা পালন করছে তাদের পেছনে দাঁড়ানো উচিত। আজকে যারা দেশ ভাগের জন্য দাবি করেছিল সেই মুসলিম লীগ তারা বলেছিল এবারে মুসলিমরা তাদের ধর্ম আচরণ করতে পারবে না, কিন্তু আমরা দেখছি পৃথিবীর সবচাইতে মুসলিম সমাজ এখানে ভালো আছে। আমি সেই যারা দেশ ভাগের পক্ষে সওয়াল করেছিল তারা কেন বলছে না আজকে বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই, পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই, আমরা মিলে এক হয়ে থাকি, আমাদের দেশ ব্রিটিশ ভাগ করে কে? তাই আমি বলবো কল্যাণদার মতো লোক তিনি যেমন বলছেন দাঁড়িয়ে যে ওয়াকফ কয়জন নামাজ পড়লে সেটা ওয়াকফের প্রপার্টি হয়ে যাবে। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय खीरी लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत किसानों के बीच खाद्य संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। खीरी जनपद की आबादी 40 लाख के ऊपर है और इस समय जनपद में खाद का भयंकर संकट है। एनपीके डीएपी किसानों को मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से किसानों की बुआई गेहूं सरसों की फसलें बुआई नहीं हो पा रही है। और अभी बाढ़ का क्षेत्र था जिसमें भयंकर रूप से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और अब बुआई के समय पर उनको डीएपी और एनपीके ना मिलने की वजह से किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या की कगार पे है। और गन्ना मिलों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया है, इसलिए किसानों की बहुत समस्या है। समितियों की तरफ से लगातार खाद की मांग की जा रही है लेकिन खाद बिल्कुल आपूर्ति नहीं है। भयंकर संकट खाद का पूरे जनपद में छाया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खीरी लोकसभा जनपद में डीपी एनपीके की आपूर्ति सुचारू रूप से कराई जाए ताकि किसान जो है खाद पाए और सुचारू रूप से अपनी बुआई कर सके। अगर खाद का संकट दूर नहीं किया गया तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खाद जरूर आपूर्ति कराई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री उत्कर्ष वर्मा मथुर। ओके सर, नेक्स्ट श्रेयस वेंकटरमन। माननीय श्री वेंकटरमन जी। வணக்கம். ஒன்றிய அரசு மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதித்திருக்கிறது. அந்த அனுமதியை ஏல உத்தரவை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவில் வேறு எங்கேயும் இல்லாத அரிய வகை நிலம் அரிட்டாபட்டி நிலம். அங்கே 3500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பெருங்கற்கால படுக்கை இருக்கிறது. 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழி கல்வெட்டு இருக்கிறது. 2000 ஆண்டுக்கு முந்தைய சமண சிற்பம் இருக்கிறது. 1600 ஆண்டுக்கு முன்பு முற்கால பாண்டியர் கட்டிய சிவன் குகை கோவில் இருக்கிறது. 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிற்கால பாண்டியர்கள் அமைத்த ஏரி இருக்கிறது. வரலாறு முழுக்க தன்னுடைய மேனியில் வரலாற்று சின்னங்களை ஏந்தி இருக்கிற அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற ஒன்றிய அரசினுடைய முடிவு। VK News, राष्ट्र के नाम।